Okay, let's start the lecture again. So the first property, actually we don't need to find that property. We have to prove it's an algebra. Algebra means it should be closed under union. Finite intersection. Finite intersection, or you can say union, and it should be closed under complementation. Okay, union and complementation prove करेंगे. The first property, let this A B belongs to S. MPT से इसमें होगा, that's obviously there. Can easily verify that. So then this A is of this form. A is equal to A1 B1 union AN BN, and B is equal to C1 D1 union CN DN. So therefore their union therefore A union B, which is again the finite union of the sets of this type. Okay, union C1 D1 union CM DM. So it again belongs to S. Because it is a finite union of the sets of this form A1 B1 AN. It's clear. Second, next we prove its closed under complementation. Let A belongs to S, then this A is equal to A1 B1 union A2 B2 union AN BN, where each set is a subset of interval 0 1. That's in the definition, where this AI BI, they are all subsets of the interval 0 1. Now we can assume that these sets are disjoint. Actually A1 B1 A2 B2 A and B, they are all disjoint, because in case suppose any two of them intersect, so we can replace that union by a single semi-closed interval. So suppose let's we have this, actually the interval 0 1, and we have the subsets A1 B1, and suppose A1 B1 and A2 B2, they intersect with each other. Okay, assume that. Then what can you say about this union A1 B1 union A2 B2? This will be A1 B2. It's equal to A1 B2. So we can write this union as a single set A1 B2, which is again the subset of interval 0 1. So therefore we can assume that these sets A1 B1 A2 B2, they are mutually disjoint. So we assume that the sets AI BI are disjoint in pairs. Disjoint, not in pairs, it's a disjoint family. Okay, not in pairs. Okay.
So any two of them are disjoint. Okay, any two of them. For if अगर ऐसा नहीं होगा, for if there exists I and J such that these two sets intersection AJ BJ is not equal to the empty set. Suppose they intersect with each other. So then this AJ, it must be less or equal to BI. Then AJ is less or equal to BI. BI. Obviously, AJ must be somewhere here, lying between AI and BI. Because if it's greater than BI, then they are obviously disjoint. If AJ is greater than BI, then these two sets are disjoint. So this AJ is greater, less or equal to BI. अब सिचुएशन इस तरह से आपके पास है 0 1, दिस इज AI, दिस इज BI, और आपके पास अब AJ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. इसकी दो पॉसिबिलिटीज है. इट्स लेस और इक्वल टू BI, ये यहाँ पर भी हो सकता है और ये यहाँ पर भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज के पास है. अब BI, अब आपके पास जो BJ है ना, वो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी किसी जगह हो सकता है. तो कंडीशन सिर्फ आपके पास ये है, इन दो का इंटरसेक्शन जो है दैट शुड बी नॉन एम्प्टी. अब फर्स्ट केस अगर AJ BJ इस टाइप का होगा, उस केस में AI इंटरसेक्शन AI BI यूनियन AJ BJ वो होगा AI BJ. So in case this BJ, if BI is less than BJ, then AI BI union AJ BJ, it's equal to, in that case it's equal to AI BJ. अब सेकंड केस है, अगर ये BJ लेस और इक्वल टू होगा BI, if BJ is less or equal to AI BI union this AJ BJ, AJ यहाँ BI is less than BJ and, और ये AJ हमने यहाँ लिया ना, and AI is less or equal to AJ. ओके, ये भी हमने लिया है इसमें. तो आप सारी पॉसिबिलिटीज देख सकते हो इन similarly for the rest of cases. Similarly, the rest of cases we can see that we can always express this union AJ BJ in the form AB. ओके, हम इसको हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. whatever case we have, we can always express this union in this form. तो अगर कोई भी दो मेंबर्स डिसजॉइंट नहीं होगी, उस केस में हम इस यूनियन को हम एक ही सेट बनाएगी, so that we have disjoint. So thus the family
Thus the family AI BI 1 less or equal to I less or equal to n is disjoint. is disjoint. अब ये फैमिली डिसजॉइंट है. अब हम और एक एग्जाम्पशन ले सकते हैं जीरो, क्योंकि फाइनाइट फैमिली है. जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो हम फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे यहाँ पर. A1 B1 हम यहाँ रख सकते हैं. अगर नहीं होगा, अगर सपोज A2 B2 फर्स्ट इंटरवल होगा, हम A1 B1 को रिप्लेस करेंगे A2 B2 से. सो बाय रिप्लेसिंग the intervals if necessary. अगर ऐसा ज़रूरी होगा, अगर पहले इसी ऑर्डर में होगी तो फिर ज़रूरी नहीं. if necessary we can assume that this 0 is less or equal to A1 is less than B1, then B1 is less or equal to A2, B1 के बाद A2 होगा यहाँ पर कोई A2 B2, और B2 के बाद होगा इसी तरह से इट इज लेस देन B2. इसी तरह से आप कंटिन्यू करोगे, लेस आर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AN लेस देन BN लेस आर इक्वल टू 1. लेस आर इक्वल टू 1. Now you can easily find its complement. You can see its complement now. So what's the complement of this union A1 B1 union A2 B2 union? That you can easily verify here. देखिए अब आपके पास इस टाइप के सेट्स है. ये है 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर A1, देन B1, देन दिस इज योर A2, दिस इज योर B2. इस तरह से कंटिन्यू आप करोगे. दिस इज AN, दिस इज BN. Now let's find its therefore इट्स कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A है ना ये यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा A1 B1 यूनियन A2 B2. अब देखिए कैसे होगा. इट इज 0 टू A1 नहीं होगा क्योंकि A1 से इसके साइड क्लोज है ये. B1 से A2, देन यूनियन B1 क्लोज होगा B1 से और A2, फिर इसी तरह से B2 से B2 से A3. ओके एग्जैक्टली. इसी तरह से आप कंटिन्यू करोगे इसकी यूनियन, आपके पास आ जाएगा BN माइनस 1 AN, और फाइनली आपके पास आ जाएगा BN1. So it's obviously it belongs to S because it is a finite union of the sets of the form semi-closed interval AB. So thus this S is closed. Thus S is closed under complementation. So therefore S is an algebra. तो वो जो केसेस मैंने रखे ना वो आप देख लेना. आप एक वो रफ पर आप कर लेना, वो सारे केसेस आप देख लेना. वो सारे केसेस में वो आप यूनियन आप देख सकते हो. दैट यूनियन इज इक्वल टू द सेमी. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये सेमी ओपन इंटरवल से बनाते हैं बाय सेमी रिंग, तो एवरी सेमी रिंग इज अलजेब्रा. एवरी सेमी रिंग है अलजेब्रा. Every algebra is a semi ring. तो ये semi ring भी आ गई है because it's an algebra. अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए. क्लोज दिस लेक्चर.